हमारे देश को नरेंद्र मोदी की बहुत आवश्यकता है देश को आगे लाने के लिए। मतलब बदलेगी और सरकार रिपीट नहीं। Jairam Thakur cannot hide behind the shield of Mr. Modi. This won't work in Himachal. BJP is going to win this election with a big margin. A high-pitched basketball match is on at Shimla's Centre for Excellence Government College. Shubham, a third-year history student, and his friends are clear about the issues that will decide their vote. What are the issues that will decide your vote this time? I guess I will vote for choose the leader basically. The leader must be important because the parties are corrupted almost every time. In some states, few are good and few are very bad. So I guess I will choose the leader. So you'll go for the face? Yes, I will go for the face, and the previous work is not much appreciable in the Himachal Pradesh. So, and I am not opposing any kind of party, but for sure I will vote for the face. You'll vote for the face. Anybody voting for the party, not the face? Or face and party, दोनों factors important हैं? फेस एंड पार्टी दोनों इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बीजेपी जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। जो आजकल के जो हमारे जो देश है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे देश को नरेंद्र मोदी की बहुत आवश्यकता है देश को आगे लाने के लिए। हमारे जो है फॉरेन के जितने भी मुद्दे हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का जो छवि को बहुत ऊंचा किया है, तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए और हिमाचल में जयराम जी की सरकार बननी चाहिए। जयराम ठाकुर, इस बार रिवाज बदलेगा। नहीं जी, इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा। ये बीजेपी का नारा है। बीजेपी का नारा है, लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया है। देखो एम्स हमें मिला है ना जी, IIM, IIIT मंडी और ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। हालांकि 2 साल में कोरोना ने वेस्ट किया जो है, लेकिन फिर भी सरकार ने एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है। चुनावों के समय जो जुमलेबाजी होती है वो सारी बंद होनी चाहिए। जब चुनाव आते हैं तभी सारी चीजें लगती हैं। महिलाओं का किराया अदा किया जाता है, बिजली बिल मतलब जो कुछ हद तक जो होता है वो नहीं देना पड़ता है। हर सरकार में यही होता है, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस तरह से फ्री सिंसियरिटी दिखाना चाहिए सरकार को। मैं इनके साथ एग्री करूंगा इनके साथ। जब भी वोटिंग की दौर आता है तभी मैं सब कुछ करने लगते हैं, सड़कों को वो करने लगते हैं डेवलपमेंट, एंड जो हमारी उचित मूल्य की दुकान है उसमें 3 मंथ्स का राशन इकट्ठा देने लगते हैं जो नहीं ले रहे पहले से, और टाइम पे नहीं देते, ओनली 1 मंथ का जो मंथ में आप ले रहे हैं। फॉर द यूथ, जैसे आप लोग नौजवान हैं, आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर है? नई पार्टी है, आपको लगता है कुछ नया बात करेगी? हिमाचल में उसके लिए फेस नहीं है, तो इसके लिए अब उस पे इतना वो नहीं बनेगा, कमांड नहीं होगी ज्यादा। तो अगर ऐसा कोई फेस हो कि जो हमारे को पता हो और हमारे से ज्यादा मतलब क्लोज हो। What are the issues that concern you as a youth in Shimla that I'm talking to you right now? What are the major issues on your mind? क्या सबसे ज्यादा बॉदर करता है? I would probably go with the drugs kind of things. Drugs? Yeah, they are quite popular in hilly areas, and they are. People will deny that there is no such thing. But there is. We have to admit that. Only then we can improve when we admit it. I want to understand when you will go to cast your vote, किस मुद्दे पे वोट दोगे? पहले तो ये देखा जाएगा कि सरकार आगे जाके काम करना अच्छा करेगी, तब हम वो सोचेंगे उसके बारे में। पहले की और जो उन्होंने पास्ट में जो करा है उसको देख के जो उन्होंने करा है, और जो जो है अगर जो अभी पूरा कर सकते हैं, यानी कि आगे आने के बाद करेंगे। हमारे कल्चर चला है फ्री बीज का, है ना जी, तो फ्री की रेवड़ियाँ हैं सबसे पहले वो बंद होनी चाहिए। कांग्रेस ने बोला है कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, वो सभी महिलाओं को, तो कैसे देंगे? वो पहले ही हमारा हिमाचल कर्ज में डूबा हुआ है ना जी। 90% जो है नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है। 90% वो पैसा देते हैं, 10% हमारी सरकार लगाती है। लेकिन जो अब कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे कांग्रेस ने बोला है 1500 रुपए देगी, तो कहाँ से देगी वो? The students, most of whom will be stepping out into the job market soon, are clear that entrepreneurship is the way forward. Is jobs an issue for you?
Is that a big concern? Yes, ma'am. I think, ma'am, employment is a huge crisis in this world. Maybe in this India or maybe in this world. So I think, ma'am, government is not working on the employment. So they should see this factor, ma'am. So if they change this, ma'am, they will give employment, then definitely I think that government will win. Youth must be inspired to employ other person and give them opportunity. So you're talking about startups. Yes, I will appreciate Narendra Modi ji for that step they took toward transforming India in IT sector and technology ways. जो यूथ हैं वो पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए अपने स्टेट को उनको छोड़ करके जाना पड़ता है. तो क्या ये फैक्टर है या फिर आप यहीं पर नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे? अगर नौकरी मिलती है तो यहीं पे कर देंगे, वरना अगर नहीं मिलती है तो फिर बाहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि यूथ बहुत है यहाँ पे और नौकरियाँ बहुत कम मिलती है, जैसे कि पोस्टें बहुत कम होती है उसमें. तो फिर ऐसा तो है नहीं कि सबको मिल सके. Of the total 55 lakh eligible voters across 68 assembly seats in Himachal, there are 1.86 lakh first-time voters. 19-year-old Sejal Pundir is among them. Will you decide your vote on the basis of who you see on the poster, or will it be on the basis of what a political party is offering to you? जैसे हम बेसिकली फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वी डोंट नो मच अबाउट द पॉलिटिक्स. तो जो उनका मैनिफेस्टो होता है, जो उनका प्रचार का वो होता है कि वो हमें ये पॉइंट्स देंगे, तो वो हम बेसिकली हमारे थिंकिंग उस तरफ जाएगी कि हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसको देख के ही वोट देंगे. व्हाट इज एन इशू दैट रियली डिस्टर्ब्स यू? थर्ड ईयर स्टूडेंट है, मतलब हम कॉलेज से बाहर जा रहे हैं, अब हम रियल लाइफ में एंटर करेंगे, तो सबसे पहला हमारा होता है कि हम जॉब पे फोकस करना है. उसके लिए हमें कोटा का बहुत बड़ा इशू है. जैसे मान लो अब हमें BSc स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे MSc के लिए अब एडमिशन चाहिए. तो HPU में अगर मैं सीख करूंगी तो उधर सिर्फ 19 सीट्स है जनरल कोटा के लिए, और HPU के अंदर कितने सारे बच्चे हैं, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है. मान लो कोई बच्चा नीडी है और वो गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकता है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता. ये कोटा हमेशा मतलब हटना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए कि सबको बराबर हक मिले. स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए? फॉर यंग गर्ल्स सच एज यू जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? सेफ्टी सिक्योरिटी क्या कंसर्न है? सेफ्टी सिक्योरिटी ये है कि हम जैसे हमारे रात को बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें हम नहीं रह सकते. अब यहाँ पे हम कॉलेज में हैं तो हमारे को पता है हम यहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं. बाहर जाना होता है मैम, जो भी आजकल केसेस होते हैं मैम, उसके बारे में भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है मैम. वो कहीं ना कहीं दब भी जाते हैं मैम केसेस. तो होना चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में बोलें. किसके बारे में आप बताएंगे? मैम जैसे अभी हमने देखा था उत्तराखंड में जो केस हुआ था मैम, तो मैम उसमें सबको पता था कि एक जो है वो BJP का जो नेता था मैम, उसका ही बेटा जो था वो इन्वॉल्व था इस चीज में. बट मैम फिर उस चीज के बारे में कुछ किया नहीं गया मैम. एंड व्हाट अबाउट फेस? हु इज वन लीडर हु इंस्पायर्स यू, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि दैट पर्सन विल डिलीवर फॉर यू? नरेंद्र मोदी. बिकॉज उन्होंने जैसे अभी वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, वो मतलब हर इंडियन को कहीं ना कहीं छुआ है कि चलो इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ तो करा है. बहुत बड़ा स्टेप होता है ये जब कांग्रेस थी तब भी बहुत टेररिस्ट अटैक होते थे हमारे यहाँ, पर जब वो हुआ था पुलवामा अटैक और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, तो मतलब वो एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है देश के लिए, वो हमेशा वो स्ट्राइक रहता है. तो नरेंद्र मोदी. मैम मैं शिमला की बात करूंगी. शिमला में मुझे लगता है टिकेंद्र सिंह पंवर जो शिमला अर्बन से विधानसभा सीट के लिए उठे हैं मैम, मुझे लगता है कि उनकी जो उनके मैनिफेस्टो में है, क्योंकि प्रचार चले थे, हमने उनके मैनिफेस्टो पढ़ी, तो मैम वो जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है वो है हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द कन्वर्सेशन दैट यू हैव एट होम? घर पे किस तरह की बातें होती हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड? मैम सबका अपना ओपिनियन होता है, तो घर वाले किसी और ओपिनियन का है तो हम किसी और ओपिनियन का है. तो मैम वो ऐसे होता है कि नहीं, हमारे लीडर्स के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े कहीं ना कहीं, और मैम हम लोग सोचते हैं कि हमें उस लीडर को चुनना है जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बात करेगा. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ employment. How much of that is a concern for all of you? हम जैसे आउटगोइंग स्टूडेंट्स है, पहले बोला जॉब सबसे बड़ा इशू होता है. अब देखो जॉब्स, अब इतने सारे हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को तो अब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है. वो तो एक मतलब ह्यूमन में भी होना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है. तो उसके लिए वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की एक जो वेव आई है हमारी कंट्री में, बहुत वेव आई है. जैसे एक शार्क टैंक है, वो कितना पॉपुलर हुआ है बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ओनली. तो कॉलेज को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे और हमें बताए कि कैसे, जैसे अभी उन्होंने फंडिंग भी चलाई कि हम स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग देंगे, तो वो हमें एक जब वे भी दे सकते हैं कि कैसे आपको स्टार्टअप्स शुरू करना चाहिए, गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए. जो एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट बिग फैक्टर जो जिस पे ध्यान देना चाहिए. इवन फॉर गर्ल्स लाइक यू वांट गवर्नमेंट जॉब्स? नो मैम, देयर इज नथिंग. जैसे आपने कहा कि ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब्स का ज्यादा होना या सीट्स का बढ़ा देना वो बहुत ज्यादा जरूरी है.
19-year-old Ankita Bhandari's murder in Rishikesh has shocked many students here, making them worry about safety and security. Anjali had joined the protests in Shimla demanding justice for Ankita. Tell me about that Uttarakhand incident. What was it so disturbing? मैम तो वो गर्ल थी, तो मैम उसने अपने फैमिली के लिए करने की ट्राई की थी, क्योंकि हो सकता है मैम उसको 1 महीना भी नहीं हुआ था ज्वाइन करके. मैम आई गेस 27 जुलाई को उसने ज्वाइन किया था और शायद अगस्त में हुआ था. तो मैम उसको एक मंथ भी नहीं हुआ था, उसकी फर्स्ट सैलरी तक नहीं आई थी. और मैम उसको वो जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था. तो मैम अब वो ऐसी थी कि मैं इस जॉब को छोड़ तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है मैम अपने घर पे. लेकिन मैम किसी ने ये चीज़ समझी नहीं और मैम उसके साथ इतना बुरा किया गया. मैम नॉट इवन इन उत्तराखंड बट हिमाचल, मैम यहाँ पे भी लास्ट ईयर एक लड़की थी मैम, तो एक लड़के ने बर्फ के टाइम उसको पुश कर दिया एंड मैम उसकी बहुत गंदी सिचुएशन थी एंड मैम उसका केस तक नहीं लिया गया. मैम सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ लड़के इनसिक्योर है मैम, कहीं ना कहीं आजकल लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है. हम अगले 5 साल में 8 लाख रोजगार देने का काम करेंगे मेरे भाई. और आप गरीब परिवार से महिला है तो साल के 3 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे. 2 नहीं 3 डोज मुफ्त में लगाने का काम भी किया है. सरकारी नौकरियां 33% आरक्षण महिलाओं को देते, 33% नौकरियां महिलाओं को देते. आपका ये जोश, आपके चेहरे की ये चमक बताती है कि कमर खुलने की तैयारी है. INB Minister, Member of Parliament from Hamirpur, and he has been on campaign trail for the last few days ever since the elections have been announced. We have managed to catch him right in the middle of action. Anurag ji, thank you so much. I've been traveling Himachal and you have a great recall value, particularly among the youth. युवाओं में एक इंस्पिरेशन का अगर मैंने पूछा सवाल कि आपको कौन इंस्पायर करता है तो उनका कहना होता है अनुराग ठाकुर. तो मैं क्या आपको युवा नेता कहूं? आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा. 4 बार का सांसद बना हूं, लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों के लिए तो युवा ही हूं. इन युवा साथियों को जब जोश भरते हैं तो मुझे लगता है कि ये ऊर्जा ये यहीं से मिलती है, जनता के बीच में से, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से. और जब माताएं बहनें अपना काम छोड़कर, देखिए शाम के टाइम पे इन सबको पशुओं का काम होता है, गाय भैंस के पास जाना है, खाना बनाना है, लेकिन उसके बावजूद मैं 2 घंटे विलम्ब हो गया. संकल्प पत्र आना था, शिमला से मैं देरी से पहुंचा, लेकिन सब अपना घर छोड़ के अपने बेटे का स्वागत करने के लिए और मिलने के लिए तैयार बैठी थी. देखिए आंटी जी भी बैठी हैं हमारी, इनका सदा आशीर्वाद मिलता रहा. You know, you particularly address the women and women as a constituency बहुत ही important रही हैं for brand Narendra Modi. You know, be it Ujjwala scheme or several reach out that has happened to the women. What is it that you're offering to women of Himachal, which are clearly the X factor election after election this time around? I think Prime Minister Modi from the day one not only believed in women development but women-led development. And in Himachal Pradesh, during BJP rule, when Prem Kumar Dhumal ji was the Chief Minister, he gave 50% reservation in the Panchayati Raj institution for the women. Today we have more than 60% women as elected representative. If you could see, women are very, very active on the field, whether it is the religious functions, cultural functions, social or the political functions. You will see them all around. And that is why the initiatives taken by the Prime Minister Modi for the welfare of the women, whether it is the construction of the toilets, a house, or a LPG gas cylinder, or maybe some other facilities for the benefit of the pregnant woman to the malnourished woman. He has been one after another new policies or the programs have come out in the favor of women. कांग्रेस ने 10 पॉइंट रखा है मैनिफेस्टो में, आप लोगों ने in order to up it you announced 11. What exactly is the logic behind 11 points in the manifesto? हमारे यहाँ पे शगन भी डालते हैं तो 11, 21, 31, 51, 101. So that is the logic.
लॉजिक भी, और हम एक कम क्यों करें महिलाओं के लिए? कांग्रेस कम कर सकते हैं, हम तो दिल खोल के एक और बढ़ा के 10% बढ़ाया है. You know, one concern that is there particularly among the youth is of unemployment, बेरोजगारी. और आप जब कांग्रेस ने अनाउंस किया 1 लाख सरकारी नौकरी, आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं नौजवान के लिए? कांग्रेस पे तो लोग विश्वास नहीं करते. 2003 में इन्होंने कहा था हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया, लोगों ने बाहर कर दिया. अगली बार फॉर्म भरवाए, बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस देंगे, नहीं दिया, फिर बाहर कर दिया. अब ये नया फॉर्म छपवा के लाए हैं. हमने जो कहा वो करके दिखाया है. मोदी जी ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 75,000 हमने 1 महीने के अंदर दे दी. Anurag ji, 4 meetings done, several more to go. Is this how a day looks like in a campaign for you? Yes, my day starts at 8 in the morning and finishes about 1:30, 2 o'clock at night. It starts with meeting people from various sectors, who want to associate with the party, or in the planning process in the morning. But the meeting starts by 9:30, the public meetings. Today we have the program to come out with the Sankalp Patra today with the party president. So I got a little late coming to the first meeting. I'm running late by a couple of hours now. But despite that, the kind of enthusiasm, the kind of support you could see, it helps, it gives me a lot of energy. Sometimes people ask me that in the last 7 days you have done more than 100 programs. I do about 14 to 15 programs every day. But I think the energy comes from the people, the kind of support they give you that keeps you, makes you going from places to places. So I think it's helping me in a way. And what is making you think that the state, which has always voted out the incumbent, every 5 years there is a new government, it alternates between two parties, which is the BJP and the Congress, it will repeat the BJP? In life, I follow a motto: give you 100%, don't think about the results. That is for me personally. But in Himachal Pradesh, I think our government, under the leadership of Jairam Thakur, they have done extremely well in many sectors, from education, healthcare, to the road infrastructure, to the vaccination program. I think he has done extremely well in the last 5 years. 2 years have been very challenging for him as far as the COVID-19 pandemic. Despite that, he has done a fantastic job in the last 5 years. So there is no reason and nothing is stopping us to go to the people. And if you could see people at this time also, whereas in hills you won't see many people outside. Yes. They are still standing outside their homes in these remote areas, waving, supporting. I think your work speaks for you, and here the Prime Minister Modi enjoys a very good rapport, because he has been the party in charge when he was the party general secretary. Before that, he was the secretary from 1994 to 2001, and that is how he knows the challenges in Himachal Pradesh. He came out for support, gave us the special status for the Himachal Pradesh. We're also seeing you continue your work as INB minister as well, holding regular press conferences, attacking and responding to your political opponents, particularly the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party is no longer a factor in Himachal Pradesh. I think the strategy of the BJP began several months ago when you made several shifts that we saw. So if Aam Aadmi Party is not a factor, why are you worried that they would be a factor in Gujarat? Gujarat, you mark my word, you wait for the results on 8th of December. BJP is going to win this election with a big margin. It's going to be a historic win in Gujarat. In the last 30 years, I can say this is going to be the biggest win for BJP in Gujarat. And in Himachal? Himachal, we are repeating. And what about the Aam Aadmi Party? You have been pretty belligerent in your attack against the Aam Aadmi Party. Because they lie, one after another. You look at Kejriwal ji's last 7-8 years. He made allegations, then he made U-turn. Then he had, even in the court, went and said sorry. So is this the right way? You make big promises, you make false allegations. That is the kind of politics you do.
member of parliament for 4 terms. You have won your constituency yourself several times. But when you look at the posters of the BJP, it is brand Narendra Modi. So are we to believe that just like Uttarakhand, when the chief minister lost, but the state was won, it was won by Prime Minister Modi? So again, the biggest factor in these elections is brand Narendra Modi? I think you can't deny that Prime Minister Narendra Modi ji is the world's most popular leader. Not once, but many times he has been elected. Now, in Himachal, he treats Himachal as second home, and Himachalis treat Narendra Modi ji as their own. So I think, I don't know whether about other states, but in Himachal, Modi ji is a big factor because people connect with him and Modi ji connect with the people well. On the other side is a collective leadership of the Congress. What we see, down the hills of Himachal is just the symbol of the Congress party, which is the Haath. And recently we saw another Yuva Neta of the Congress, which is Priyanka Gandhi Vadra campaign here. Will there be a factor? How much of a worry is the Congress party for you? We take every election very seriously. And here there's a direct fight between two political parties, Congress and BJP. And on many seats, Congress have very serious leaders who are contesting and who have been MLAs for a long period. But they're also having the anti-incumbency against them. I personally feel it is the good governance and development of BJP which is going to help BJP, and the clean government at state, at the central level, and the big projects given by Prime Minister Modi for the state is going to be very useful in the campaign. And also whatever we have promised in the past, we have delivered that. And we have given much more than what we have promised in the last manifesto. And what about the rebels? How much of a headache are they? We have about 12-13 rebels now. It could be a headache for anyone, but I personally feel by the end of the day, the voter is very smart. They understand, they are intelligent, that the voting for a political party will always benefit. So they're going to benefit for a party who believes in development like BJP, and they've seen our work. They won't go for the rebels. You've arrived for your next meeting? No, there are just people standing on the road to welcome, so I'll just go and come back. Yes, Give me a minute. So 8th of December, when you'll give me time for another interview, I'm hoping, what will you be telling me? What will be the number like? Let me not give the number, let me just say this, that we're going to win more seats than the last election. I could see the Prime Minister Modi's popularity here, Prime Minister Modi's connect here, Jairam Thakur's good work here. So I think he has delivered on the ground, Jairam Thakur ji, and he deserves another innings to rule the state, to govern the state, and to take it to the next level. I think nobody could ask for a better time to be in the hot seat as a CM. It's just another day for 48-year-old Rajendra Mehta and 34-year-old Satish Madhania on Shimla's iconic Mall Road. Both guides by profession have differing viewpoints on the tourism industry and its future in the state. अभी इलेक्शंस आ रहा है, क्या कंसर्न्स है सबसे ज्यादा? मैम अभी इलेक्शंस के ऊपर तो देखिए टूरिज्म के ऊपर जितना भी हमारा गवर्नमेंट ने काम किया है वैसे बहुत अच्छी तरह से बोलना चाहेंगे तो अच्छा हमारे जो टूरिज्म सेक्टर हिमाचल स्टेट में हमारा शिमला जो है मनाली जो टूरिस्टिक यहाँ पे जगहें हैं यहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेके बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो वर्तमान में अभी सरकार थी हमारी बीजेपी की अच्छे रोड्स के लिए उन्होंने कोशिश की है अच्छे हाईवेज बनने वाले हैं। इस बार सरकार तो
मतलब बदलेगी और सरकार रिपीट नहीं होगी सरकार। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब अब पूरे हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्री के बेसिस मैं पे अपने इंडस्ट्रीज के बारे में बेसिकली हिमाचल गवर्नमेंट ने टूरिज्म के लिए कुछ भी नहीं किया। Satish completed his masters from Himachal University before pursuing a vocational training course as a guide. He talks about how offbeat locations are popular among tourists, and he is open about his choices in the election. His vote is for development, and he says the BJP has improved infrastructure in Himachal. समवेयर मैं तो नहीं बोलूँगा शायद, क्योंकि देखिए मैम हमारे यहाँ पे जैसे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है वैसे स्टेट में। चलो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से सबको परेशानी आई, हमारे को भी परेशानी रही। अनाउंसमेंट हो सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट हो। देखिए ये टूरिज्म के पास बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन विजन किसी के पास नहीं है ना। When you go to cast your vote, 12 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट देंगे? मैम देखिए डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट टू द बीजेपी, बिकॉज हमारे जितना भी इकोनॉमी आज की डेट में लोग घूमने आ रहे हैं, हमारे पास बिजनेस आ रहा है। जब देश की इकोनॉमी बढ़ी है ना, तभी लोग घूमने निकल पा रहे हैं घर से। Politically, it's very active. Oh, yes. On the Mall Road, we also meet Dr. Nitin Vyas, a professor of tourism at Himachal University. He says the tourism industry in the state is seeing a sharp change with several startups now coming up across the state. Your family also? Yes. सरकार ने जो नौजवान हैं उनको विलेजेस में अपना जो हमारा जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का हमारा फोक है, उस फोक को डेवलप करने के साथ साथ उन विलेजेस को डेवलप करने की बात कही है, ताकि जो टूरिस्ट है वो शिमला मनाली ना जाए, वो डायरेक्ट उन विलेजेस में जाए। जो यहाँ का हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इन योजनाओं का फायदा उठाया है और नाउ दे हैव स्टार्टेड, यस स्टार्टअप्स दे हैव स्टार्टेड नाउ। सो ऐसा नहीं है कि टूरिज्म सेक्टर में काफी स्टार्टअप शुरू हुई हैं। यस, और उसमें मैं अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर ऑफ टूरिज्म और मैंने पीएचडी भी टूरिज्म में की है। इसका एक कारण है कि बहुत बड़ा एक जो तबका है नौजवानों का, वो नाउ दे आर कमिंग टुवर्ड्स, दे वांट टू स्टडी टूरिज्म। तो जो भी टूरिज्म की डिग्री लेके वापस जाता है और वो सारी इन चीज़ों को सीखता है और उसको एक्सपोजर मिलता है, तो उस एक्सपोजर के बाद जब वो अपने गाँव में जाकर अपना बिजनेस शुरू करता है, तो वो सिर्फ रोजगार पाने वाला नहीं है, बल्कि साथ में 10 लोगों को उस गाँव में रोजगार भी देता है। Keeping pace with changing times are the veterans of Himachal's hotel industry. Mohinder Seth, the president of the Tourism Industry Association, and his friends Anil Bhardwaj and Pratap Chauhan have ventured into homestays. We meet them over a chai pe charcha. जब भी इलेक्शन होता है, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस आता है. What is it that you expect from a government? और क्या किसी सरकार ने डिलीवर किया है? इतने सारे प्रोमिसेस होते हैं. देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, वो दिस इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश, और हमारा जो सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जो है, इसके ऊपर भी हम बहुत संभावनाएं हैं. डेफिनेटली सरकार, जो भी कोई सरकार आती है, वो उस पर फोकस तो करती है, मगर उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट. तो मैं समझता हूँ कि जो भी कोई नई सरकार आए तो उसको इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा किस तरह की तवज्जो आप बोल रहे हैं? प्रॉपर पब्लिसिटी. जो ओल्ड आपके जो जितने भी आपके ओल्ड डेस्टिनेशंस हैं, लाइक शिमला, मनाली, डलहौजी, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि नया डेस्टिनेशन आने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं. And all of you are hoteliers running your own resorts and homestays. What has changed in these years? क्या बदलाव आपने देखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. हमारी विलेज टूरिज्म या रिमोट टूरिज्म जो है, जो पहले बिल्कुल नहीं लोग रहते थे, उसमें काफ़ी इजाफा हो गया. एंड होना भी चाहिए. लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है उससे. बट हमारे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म लैकिंग है.
Himachal Pradesh's tourism sector is 7% of the state GDP, employing close to 3 lakh people in the 9.7 lakh private sector workforce. While the pandemic caused an 81% fall in tourist arrivals in 2020, this year the state broke all previous records, registering the highest footfall of 66 lakh tourists till May. That's close to 90% of the state's population. The mushrooming of Airbnbs in Himachal Pradesh has forced hoteliers to rethink their old style of functioning. Those like Pratap Chauhan think that there is a need for policy intervention to contain the alarming shift. You know, there's a mushroom growth of these kind of, you know, like homestays हो गए, Airbnbs हो गए, क्योंकि आपने मतलब नीचे ढाबा कोई राशन की दुकान है ऊपर, ये मतलब ये सरकार को थोड़ा इस पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इससे एक तो टैक्स चोरी हो रहा है, इससे जो होटलियर्स हैं, हमने इतना इन्वेस्ट करके एक बड़े स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वी आर पेइंग द टैक्सेस, वी आर पेइंग द पे एंड दिस, और भी कई चीज़ें, वो हमारे कंपटीशन, हमारे लिए एक बड़ा अनसीन कंपटीशन भी है। वो आप बिल्कुल है ही है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आप नीचे आप करियाने की दुकान चला रहे हो, ऊपर आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चला दिया, और होम स्टे है आपका, उसमें कोई नॉर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आज की डेट में कुछ टूरिस्ट ऐसे भी आना चाहते हैं जिनको मतलब ये होता है, दे आर कमिंग द यू नो इन मर्सिडीज, बट दे वांट टू स्टे इन सच अकोमोडेशन विच आर वेरी लो पेड अकोमोडेशंस। अगर आपका प्रॉपर होम स्टे है या B&B है, वी अप्रिशिएट दैट। उन लोग से टैक्स नहीं लिया जाता है? बेसिकली यू नो जो होम स्टे स्कीम है उस पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम there was exemption on luxury tax, but as far as the GST is concerned, there is no exemption. So they are avoiding tax. Basically, this is what is happening. Secondly, जो आप जैसे प्रताप जी ने बोला, हमारी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, जितने वो बनते चले जा रहे हैं, जो बन गए हैं उसको तो हम we have no this thing. Who gives them licenses? दिस इज द प्रॉब्लम दैट द B&B का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ITDC देती है उसको। एज फार एज आवर होम स्टे इज कंसर्न, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी। तो जब से मुझे कमेटी में ले गया, हमने उसमें अंकुश लगाया। अब हम देखते हैं कि वो जैसे प्रताप जी ने बोला कि कहीं शॉप के ऊपर तो नहीं, कहीं भी होम स्टे बन रहा, क्योंकि उसका सारा पर्पज ही फॉरफिट हो गया ना जी। इफ यू आर गोइंग टू अ होम स्टे, व्हाट इट सेज दैट कि आप एक फैमिली के साथ रहेंगे, फिर वो आपको वहाँ का लोकल क्यूजिन कराएगा देगा, फिर वो आपको वहाँ का कल्चर के बारे में बताएगा, कुछ ऑर्चर्ड्स घुमाएगा, कुछ गार्डन्स घुमाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं रहा है। तो हम समझते हैं कि सरकार को इसको बड़ा ही सीरियसली लेने वाला मैटर है। All of you are seeing that as the big competition right now. I mean, the big challenge to the hotel industry is coming because of this mushrooming of B&Bs. It has already come. No, we are not against. Actually, the homestays. Actually, this concept of homestay was launched because the government wanted to, you know, promote the rural tourism, and they wanted to they wanted to give the income to the rural people. But वो concept अब नहीं है. 30-year-old Aditya Pal is a third-generation restaurateur. His family has been running the famous Sher-e Punjab restaurant since 1954. Aditya had the option of continuing with the family business after he returned home to Shimla, completing his hotel management course from the Pusa Institute in Delhi. Instead, he chose to start his own restaurant in 2016. So, Aditya, you know, hotel industry, as you heard from your uncles, I would say, all of them are of the opinion that this industry has collapsed. Yes. And you came to Shimla and started a restaurant of your own. Right. And not one, but 2 restaurants. Definitely. With time, yeah. Yes. Why did you expand and why did you come back? See, come back was because basically I'm in love with Shimla. I went to Delhi, I worked there, but basically over there, what I found was that it was just running as a rat race over there. Over here, there's still peace and you have actually fun working over here. And then it's in my blood to actually operate a restaurant, so I just always wanted to do that. And being close to my family, that was my main priority, frankly speaking. So I had to come back. How many people of your generation, a 30-year-old, would return to Shimla? I want to understand that. See, that is up to my bringing up and basically my understanding of Shimla, that I thought that there is a big market gap over here. When I actually entered inside, I really saw there's a big market gap.
Because over here, there was no new places to go to. Even me, being here, born and brought up here, I used to have very few places to go. So I said, why not just create your own? Aditya is bullish about the industry and says the government's 2025 plan gives him hope that his business will only grow. As a young restaurateur, what will decide your vote on 12th? See, vote is nothing like that. If you vote is something different. Because I see the overall development as well. I see, like over here, I'm seeing like there is a new turn-up plan of 2025 there where the government is committing that they're going to give 24 hours water supply as well. Then basically we are getting a tram service which is connecting. So if there is growth, I see my business growing as well. If I see more connectivity to the whole like inner circle of the Shimla, then basically that's really good. Wherever there's development, I'll basically vote over there.